Hello my dear students, welcome to the 7th lecture of electrostatic potential and capacitance. In this lecture, we will discuss the MCQ questions of parallel plate capacitor. First question from the MTG fingertips books is, in a parallel plate capacitor, the capacity increases if first option area of the plates decrease, second option distance between the plates increases, area of the plates is increased, and the dielectric constant decreases. So here in this particular case, what is a capacitor? We know that when two plates of equal area are separated by some distance d, when two plates of area L, here its area is A and this plate is also having area A, clear, and distance of separation between the plates is d. So when this kind of system is connected to a external supply, that is a DC source, then these plates will store equal and opposite amount of charge. So if this plate will store positive charge, then this plate will store negative charge. So here in this particular case, what will be the capacitance of this parallel plate capacitor? We know that the capacitance of this parallel plate capacitor is epsilon naught A divided by D. Clear? So here this capacitance of a capacitor, it is a constant for given charge and potential, because we know that Q is proportional to P and from there we got the proportionality constant as C. तो यहाँ पे इसमें Q and V के लिए C क्या है? C is constant and C, which is the capacitance of a parallel of a means normally for any kind of capacitor, that generally depends upon the dimension of the given capacitor. Clear? So here, as it is a parallel plate capacitor, so in this particular case the capacitance depends upon the shape and size of the given capacitor. So here capacitance will increase if area cross section of the plates will increase, and capacitance will increase even if the distance between the plates is decrease. So this is how the capacitance depends upon. So capacity will increase, so in which case it will increase if either area increases or distance of separation between the plates decreases. Area of the plate decrease, it is saying it is decreased, so that means it is wrong. Distance between the plates increases, distance between the plates increase, so but here we want decrease, so that is also wrong. Area of the plates increases, option C what is saying area of the plates increases, that is correct. Then capacitance will increase, that is correct. And dielectric constant decreases. Dielectric constant means, suppose in between the plates if we insert a medium or any object or which is having some dielectric constant, then in that particular case we know that the new capacitance will be dielectric constant times the original capacitance. That means capacitance when plates are separated by air or vacuum. So यहाँ पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ जो रिलेशन है वो कैसा है? वो डायरेक्टली डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस वहाँ पे इंक्रीज होगा, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होगा तो वहाँ पे कैपेसिटेंस आपका न्यू कैपेसिटेंस जो होगा वो डिक्रीज होगा. तो यहाँ पे कैपेसिटी इंक्रीज कब होगा? जब हमारा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू वहाँ पे इंक्रीज होगा. Clear? So that means option D will also be wrong. So here in this particular case, option C, that will be the correct one. Next, in question number 54, a parallel plate capacitor has two square plates with equal and opposite charges. The surface charge density on the plates are plus sigma and minus sigma respectively. In the region between the plates, the magnitude of electric field is. So here what they are saying is that there are two square plates. Square plates with equal and opposite charges. So here I'm taking two square plates having same area, having area, this is having area A, and here this one is also having area. Both are having same area, and let the distance of separation over here be D, and it carries equal and opposite charges. That means this is having, if this is having minus Q, then let this be having plus Q. The surface charge density on the plates are plus sigma and minus sigma. So here in this particular case, if this one is negative charge, that means this plate will be having negative surface charge density and this one will be having positive surface charge density. In the region between the plates, the magnitude of electric field. So here in this particular case,
if you just think how these charges will be distributed, these charges will be distributed uniformly over the surface. These charges will be distributed uniformly over the surface. So here it will be positive charge, just like this. So right now what it is asking to find out the electric field, net electric field in the region between the plates. So net electric field at point P. So here in this particular case, if you just look at the left side of the capacitor plate, so that is negatively charged and it will behave as a infinite sheet. Clear? So that one plate, one or you can say individual plates, individual plates, individual charged plates will behave as an infinite set or infinite set of charge. That means we have already discussed that concept in Gauss law, how to find or what will be the electric field due to a sheet which is in infinite sheet which is charged. So in that particular case, the electric field due to the sheet is nothing but sigma upon 2 epsilon naught. Clear? So that depends upon the surface charge density on the sheet or charge sheet. So this is how it is related. So that means over here in this particular case, at location P, the field due to this negatively charged sheet, will be towards the sheet, and field due to the positively charged sheet, here this is right side one is positively charged sheet, and the field due to that one will be also away from the given sheet. That means field due to the negatively charged sheet will be how much? It will be minus, और यू कैन से सिंपली डायरेक्शन यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग इंक्लूड कर चुके हैं, सो नो नीड टू पुट द डायरेक्शन. और इफ यू वांट टू शो द डायरेक्शन एज द फील्ड आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, सो इट विल बी माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, and electric field due to the positively charged sheet, it will be how much? Electric field due to the positively charged sheet, that means it is again minus sigma by 2 epsilon naught. Clear? So finally what will be the net electric field? So net electric field E net will be equal to minus, if I take common, sigma upon 2 epsilon naught plus sigma upon 2 epsilon naught. So we are adding them. So how much will get? Minus sigma upon epsilon naught. So this is the net electric field and which is directed towards left. तो net electric field हमें magnitude wise यहाँ पे कितना मिलेगा? Magnitude wise E net will be how much? Simply sigma upon epsilon naught. Such type of question we have already solved in chapter number 1. So option B over here will be the correct one. Okay. तो इसमें एक चीज़ आपको ऐसे भी ध्यान में दे सकते हो, अगर मान लो कि लेफ्ट प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इफ इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड and the right plate of the capacitor if it is negatively charged, that means inside the field will be towards right, and that will obviously comes out to be plus sigma upon epsilon naught. Clear? Okay, here in question number 55, a parallel plate air capacitor is charged to a potential difference V volts. Okay, fine. So initially what they have told us is that there is a parallel plate capacitor. So assume that this is a parallel plate capacitor. Okay, so this is already charged. That means here in this particular case, let us assume these plates are connected to an external source. Okay, the source potential is V volt. That means right now over here the potential, which is the potential difference that will be generated across the plates of capacitor, if it is charged, already charged, that means it will be same as the source potential. So here what is saying, parallel plate capacitor is charged to a potential difference of V volt, so it is already charged. That means here as this this upper plate of the capacitor is connected to positive potential, so that means this plate will acquire positive charge.
this plate will acquire positive charge like this, and the lower plate will acquire negative charges like this. Clear? Okay, so fine. Over here, so positive charge, let it be plus q, and equal amount of negative charge will be there in the lower plate. After disconnecting the charging battery, the distance between the plates of capacitor is increased. So here in this particular case, what we'll be doing, so we'll be taking this plates only, we'll be taking only the plates, this plate. Clear? So here distance between the plates, so what is the distance between the plates? Initially the distance between the plates, let it be d. Clear? So what they are saying, after disconnecting, here it is now disconnected from the source. So right now if it is already charged, and if you are disconnecting the capacitor after charging, that means here in this particular case, one thing that will not change, that is its net charge. Clear? Or you can say that is the charge on the plates that will not change over here, that will remain constant, or that will remain as it is. तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट रहेगा? चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर वो कांस्टेंट रहेगा. क्लियर? सो राइट नाउ व्हाट दे आर सेइंग, आफ्टर डिस्कनेक्टिंग, if the plate separation, if the distance between the plates of capacitor is increased is by using an insulating stand, as a result potential difference between the plates. तो अभी इससे पहले जब हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं तो इसमें चार्ज कितना है? चार्ज क्यू उतना ही रहेगा जितना पहले था. बट अभी हम इसको क्या करेंगे? अभी हम प्लेट सेपरेशन यहाँ पे इंक्रीज करेंगे. विल इंक्रीज द प्लेट सेपरेशन टू दिस अमाउंट. क्लियर? सो अभी जो डिस्टेंस है इन दोनों के प्लेट्स के बीच में, ये दोनों प्लेट्स के बीच में मान लो कि डिस्टेंस अभी थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं. वी आर मेकिंग इट डी प्राइम. क्लियर? एंड डी प्राइम इज ग्रेटर देन डी. सो व्हाट इज आस्क सेइंग, एज ए रिजल्ट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स. तो अभी इस दो प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसमें क्या चेंजेस आएगा? सो वी जस्ट नीड, एज इट इज़ ए कैपेसिटर सिस्टम, तो इसमें एक चीज़ तो हमें ध्यान में रहना है कि कैपेसिटेंस कितना होगा प्लेट का. क्लियर? कैपेसिटेंस एट दिस पर्टिकुलर पोजिशन विल बी एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी. But when we change the distance between the plates, then at the time the capacitance will change, and that will be epsilon naught A by D prime. So remember one thing over here, we are keeping area of the plates is also constant. Area of the plates of the capacitor is also not changing. Clear? तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसमें एक चीज़ तो है कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा? कैपेसिटेंस दैट विल डिक्रीज. क्लियर? सो दैट मीन्स ओवर इन दिस न्यू कैपेसिटर सिस्टम, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सिस्टम, द कैपेसिटेंस विल डिक्रीज. कैपेसिटेंस यहाँ पे क्या होगा? फाइनली डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो कैपेसिटेंस वहाँ पे डिक्रीज होगा. सो फाइनली कैपेसिटेंस डिक्रीजेस, देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर एंड पोटेंशियल. सो यहाँ पे इन दोनों प्लेट्स के बीच में हम मान लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कुछ होगा. लेट इट बी वी प्राइम. क्लियर? देन व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ओवर हियर? हियर पोटेंशियल वी इक्वल टू क्यू अपॉन सी, एंड द पोटेंशियल ओवर हियर विल बी क्यू अपॉन सी प्राइम. Clear? So here in this particular case, charge in both the cases that is constant. Clear? चार्ज हमें constant रखना है, लेकिन अब आप देखेंगे इस वाले particular केस में कि जो C प्राइम है, C प्राइम is less than C. Clear? If C prime is less than C, why? Because distance is increased, that's why capacitance is decreased. So if capacitance decreases, that means the potential difference which is inversely related to the कैपेसिटेंस. तो कैपेसिटेंस यहाँ पे ये डिक्रीज कर रहा है, ये कम हो रहा है, तो पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस दैट विल इंक्रीज. दैट मीन्स वी प्राइम विल बी ग्रेटर देन वी. तो जो न्यू पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल क्या होगा? इंक्रीज होगा, दैट विल इंक्रीज. तो इसका एक एग्जांपल हम यहाँ पे इसमें देख सकते हैं. ये वाला केस है, यहाँ पे एक सिमुलेशन प्रोग्राम है. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर मान लो कि ये एक कैपेसिटर प्लेट से, ये बैटरी है, बैटरी में मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ. और ये अगर देखोगे हियर इन दिस पर्टिकुलर केस, दीज आर टू पैरेलल प्लेट्स of a capacitor. They are having some distance of separation, let it be 6 mm, and here how much we are getting? We are getting the capacitance to be 0.30 picofarad. Clear?
So right now over here, if we just look, what will be the potential over here, how much we are getting? It is 1.5 volt. It is showing how much, same as the potential of the applied source. Clear? अभी हम इसको क्या करेंगे, विल डिस्कनेक्ट दैट वन, विल डिस्कनेक्ट द कैपेसिटर फ्रॉम द सोर्स, बट स्टिल व्हाट इज द पोटेंशियल ओवर हियर? पोटेंशियल अभी यहाँ पे कितना है? 1.5 वोल्ट, दैट इज नॉट चेंजिंग. क्लियर? So here in this particular case, right now what we'll do, we'll increase the separation between the plates. Clear? As given in the question, if we'll increase the separation between the plates, see, as we increase the potential separation between the plates, then what is happening? Initially the separation between the plates was 6 mm. Clear? 6 mm. It was 6 mm. At the time potential difference between the plates was 1.5 वोल्ट. यहाँ पे 1.5 वोल्ट है और कैपेसिटेंस कितना है? 0.30 पिको फैराड. बट अभी हम इसको अगर डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, वी आर इंक्रीजिंग अप टू ए डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ, लेट इट बी 8 मिलीमीटर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होगा. तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेट्स के बीच में कितना आ रहा है? 2 वोल्ट हो जा रहा है. और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कैपेसिटेंस क्या आ रहा है? 0.22 पिको फैराड आ रहा है. दैट मीन्स लेस देन द इनिशियल कैपेसिटेंस. क्लियर? तो ये वाला केस यहाँ पे है. जब हम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन यहाँ पे इंक्रीज करेंगे तो वहाँ पे पोटेंशियल इंक्रीज होगा एंड कैपेसिटेंस विल डिक्रीज. एंड सिमिलरली अगर हम इन दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन जो है उसको 6 से कम करेंगे, 6 से कम मतलब मान लो कि हम दोनों के बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 4 mm कर रहे हैं. सो व्हेन वी आर डिक्रीजिंग द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, देन कैपेसिटेंस इज 0.44 पिको फैराड एंड वोल्टेज इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है. क्लियर? तो ये जो है इसमें ये वाला फैक्टर है कि जब हम डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स of a charged capacitor is increased, then in that particular case capacitance will decrease based upon the dimensions, मतलब based upon the shape and size of the capacitor. तो कैपेसिटेंस वहाँ पे डिक्रीज होगा और कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रहा है तो वहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल इंक्रीज होगा क्योंकि चार्ज वहाँ पे कांस्टेंट रह रहा है. क्लियर? सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन. Moving to question number 56 over here. A parallel plate capacitor is charged and then isolated. The effect of increasing the plate separation on charge, potential, capacitance respectively. Okay. So here in this particular case, as you have solved the previous topic में जो क्वेश्चन था उसी का सिमिलरिटी यहाँ पे है. यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर दो सपोज हियर इन दिस पर्टिकुलर केस इफ वी टेक already one charged capacitor which is already charged means suppose this is having positive charge plus q and this is having negative charge minus q. Clear? Distance of separation between them is already, let it be d, and area of both the plates, let it be a. Clear? So right now what it is done, it is isolated, that means it is completely disconnected from the rest other surrounding. Right now the effect of increasing the plate separation on charge, so here in this particular case what we'll do, will increase the separation between the plates. Clear? तो separation को अगर हम increase करेंगे यहाँ पे, here if we'll increase the separation, let it be over here. So here in this particular case right now the distance of separation between the plates is d prime. So if we increase the distance of separation, then in the particular case what we know, we just know that c is epsilon naught a by d. Distance increases, capacitance decreases. That means over here let the capacitance, if it is c, and over here if the capacitance is c prime, that means c prime will be less than c. Clear? And तो capacitance यहाँ पे क्या होगा? capacitance का that will decrease, so capacitance will decrease, so decrease यहाँ पे तीनों जगह पर है. Clear? Next we'll check about what? चार्ज जो पहला वाला केस है. अच्छा, चार्ज में क्या चेंजेस आएगा? चार्ज में कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम है और आइसोलेटेड सिस्टम में नेट चार्ज और यू कैन से चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर दैट विल रिमेन एज इट इज. क्लियर? सो बिकॉज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज डू नॉट चेंज. क्लियर? तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को इंडिकेट कर रहा है. क्लियर? तो इस वाले पर्टिकुलर केस में चार्ज क्या होगा? चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट. तो कांस्टेंट भी यहाँ पे तीनों जगह पर प्रेजेंट है, तो डिक्रीज, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है.
तो उसके हिसाब से हमारा कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है। क्लियर, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो इसको हम नहीं लेंगे, तो ये दोनों तो पहले से ही यहाँ पे कट गया। क्लियर, फिर उसके बाद हमें इन दोनों में से चेक करना है, दैट मीन्स विल नॉट चेक द थर्ड ऑप्शन, विल नॉट चेक नाइदर द सेकेंड एंड थर्ड. So out of first and second, so which one will be correct? That will be decided by the potential. So here in this particular case, capacitance is decreasing. So how the capacitance, how the potential, capacitance and charge is related? V equal to Q upon C. Capacitance is decreasing, that means potential will increase. So capacitance decreases, potential increases. That means the new potential between the plates of parallel plate capacitor will be greater than the initial potential over here. So capacitance will increase. So here in option 8 is written decreases, that means option A is wrong, and here it is increasing, that means option D will be the correct one. In question number 57, parallel plate capacitor is connected to battery as shown in figure. This is how the connection shows. Means here it is a battery, this is negative terminal and this is positive terminal. This is key K and this is a capacitor. So finally over here, if key is closed over here, then capacitor will get charged, and the upper plate of the capacitor will be negatively charged and lower plate of the capacitor will be positively charged. Consider two situations. First, key is kept closed and plates of capacitor are moved apart using insulating handle. Clear? So यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि की को हम क्लोज करके रखें, मतलब ये सिस्टम पूरा का पूरा कनेक्टेड रहेगा सेल के साथ, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो चार्जिंग, दैट मीन्स कैपेसिटर विल बी ऑलरेडी चार्ज, एंड व्हेन वी सेपरेट द प्लेट्स ऑफ द चार्ज कैपेसिटर विच इज कनेक्टेड टू द सेल. क्लियर, कनेक्शन हुआ ही होगा और उसके साथ हम प्लेट को सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, उसमें पहला बोला जा रहा है कि की के इज क्लोज एंड प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आर मूव्ड अपार्ट यूजिंग इंसुलेटिंग हैंडल. सेकेंड केस जो है, सेकेंड केस में ये होगा की के इज ओपन, के की जो होगा यहाँ पे ये डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा. क्लियर, यहाँ पे की नहीं रहेगा. क्लियर, दैट मीन्स दिस इज डिस्कनेक्टेड, दैट मीन्स देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट और नो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर. क्लियर, so key K is opened and plates of capacitor are moved apart using insulating handle. Clear? So तो अभी क्या करेंगे, तो चार्ज दैट कैपेसिटर व्हिच विल बी ऑलरेडी चार्ज्ड. क्लियर, उसके बाद हम की को ओपन करेंगे और उसमें प्लेट को सेपरेट करेंगे. क्लियर, तो उसमें ये दो केसेस यहाँ पे हमें बताए गए हैं कि तो उसमें रिजल्ट क्या मिलेगा. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल चेक ओवर हियर द फर्स्ट केस. पहला वाला जो केस है इसमें ये बोला गया है हियर इन दिस पर्टिकुलर केस कि की यहाँ पे रहेगा, की विल बी क्लोज्ड एंड विल सेपरेट द प्लेट्स. सो इसके लिए हम एक फिगर यहाँ पे देखेंगे. विल जस्ट गो थ्रू ए सिमुलेशन प्रोग्राम. तो हियर दिस इज द केस. यहाँ पे अगर हम देखेंगे, here this is a cell battery which is connected to the capacitor plates, parallel plate capacitor, and right now potential difference applied over here is 0 volt. Clear? अभी इस वाले पर्टिकुलर केस में कैपेसिटेंस इसका कितना शो कर रहा है, कैपेसिटेंस इज 0.30 पिकोफैराड. क्लियर, तो ये उसका कैपेसिटेंस है और ये जो कैपेसिटेंस है ये उसका शेप एंड साइज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो उसी शेप एंड साइज़ के ऊपर ये कैपेसिटेंस हमें मिल रहा है. अच्छा, एंड प्लेट चार्ज अभी कितना है, प्लेट चार्ज नथिंग, यहाँ पे 0 है. और तो फाइनली हियर इन दिस पर्टिकुलर केस पोटेंशियल डिफरेंस भी इस पहले पर्टिकुलर केस में अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना आ रहा है, ये 0 मिल रहा है. राइट नाउ व्हाट विल डू, विल मेक द अपर प्लेट नेगेटिवली चार्ज एंड लोअर प्लेट पॉजिटिवली चार्ज. तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक सेल बैटरी जो है इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं. सो वी आर गिविंग सम पोटेंशियल डिफरेंस. सो फाइनली ओवर हियर यहाँ पे आप देख सकते हैं अपर प्लेट यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज आ रहा है और लोअर प्लेट यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज आ रहा है. क्लियर, और चार्जेस भी यहाँ पे हमें ऊपर में दिख रहा है कि जो ऊपर वाला प्लेट यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस है और नीचे वाला जो प्लेट है उसमें हमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे मिल रहा है. क्लियर, अच्छा, तो अभी इस वाले पर्टिकुलर केस में अगर हम देखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स के बीच में कितना आ रहा है, -1 पर. जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अप्लाई किया गया बैटरी के थ्रू उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस हमें प्लेट्स के बीच में अभी मिल रहा है. क्लियर, सो हियर इन दिस पर्टिकुलर केस अभी क्वेश्चन में से बोला गया कि बैटरी कनेक्टेड रहेगा और हमें प्लेट के बीच में जो सेपरेशन है उसको चेंज करना है. क्लियर,
तो सेपरेशन अभी कितना है, सेपरेशन इज 6 mm, सो राइट नाउ विल इंक्रीज द सेपरेशन टू 8. So here I am increasing the separation to let it be 8 mm. क्लियर. तो इस वाले पर्टिकुलर केस में अभी 8 mm सेपरेशन है, तो चार्ज अभी कितना आ रहा है, 0.33 पिको फैरेड. क्लियर. चार्ज हमें अभी कितना मिला है, 0.33 पिको फैरेड. और वोल्टेज यहाँ पे कितना है, वोल्टेज उतना ही कांस्टेंट रह रहा है. क्लियर. वोल्टेज हमें वही उतना ही 1.5 वोल्ट, नेगेटिव 1.5 वोल्ट यहाँ पे हमें मिल रहा है. तो जब डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन हमारा 6 mm था, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जब हमारा 6 mm था, तो चार्ज कितना था, 0.44 पिको कूलम. क्लियर. 0.44 इंटू 10⁻12 कूलम था. और जब हम सेपरेशन को 8 कर रहे हैं, व्हेन वी आर मेकिंग 8, सो इट इज 0.33. दैट मीन्स चार्ज अभी इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. क्लियर. चार्ज डिक्रीज हो रहा है, उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो कैपेसिटेंस भी वहाँ पे उसमें भी चेंजेस आ रहा है. क्लियर. कैपेसिटेंस में कितना चेंजेस आ रहा है, जब 6 था सेपरेशन तो 0.30 पिको फैरेड था. जब हम उसको 8 कर रहे हैं, व्हेन वी आर मेकिंग इट 8, तो देन इट इज डिक्रीजिंग टू 0.22 पिको फैरेड. क्लियर. तो यहाँ पे इसमें भी डिक्रीज हो रहा है. क्लियर. तो चार्ज इज ऑल्सो डिक्रीजिंग एज वेल एज कैपेसिटेंस इज ऑल्सो डिक्रीजिंग. कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रहा है किस लिए, क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, एंड डिस्टेंस के साथ कैपेसिटेंस का इन्वर्स रिलेशन है. सो इसलिए कैपेसिटेंस वहाँ पे डिक्रीज हो रहा है. तो फाइनली ओवर हियर व्हाट वी कैन से इज दैट here in this particular case, that means when it is connected, when key is closed, and if we separate the plates of capacitor, if separation increases, if distance is increased between the plates of capacitor, that means over here capacitance will decrease. Clear. capacitance जो होगा प्लेट के बीच में वो डिक्रीज होगा. वो कौन सा रिलेशन से, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D. D इंक्रीज होगा तो C यहाँ पे डिक्रीज होगा. क्लियर. ओके. तो C डिक्रीज होगा तो उसके साथ हमारा यहाँ पे क्या कांस्टेंट रहेगा, V विल रिमेन कांस्टेंट. पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन कांस्टेंट, दैट विल नॉट चेंज. क्योंकि आप सेपरेशन बढ़ाओ घटाओ कुछ भी करो, कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो सकता है, मतलब वो कैपेसिटर प्लेट्स जो है कैपेसिटर, हाउ मच इट कैन बी चार्ज टिल द पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट एज द पोटेंशियल ऑफ द सोर्स. सोर्स का जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल तक हम कैपेसिटर को चार्ज कर सकते हैं. क्लियर. तो पोटेंशियल तो यहाँ पे कांस्टेंट होगा, लेकिन पोटेंशियल कांस्टेंट और चार्ज के बीच में रिलेशन क्या है, सो वी नो दैट Q इक्वल टू C इंटू V. क्लियर. सो दिस फैक्टर इज रिमेनिंग कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रह रहा है. और कैपेसिटेंस यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा तो चार्ज स्टोर्ड भी डिक्रीज होगा. दैट मीन्स ओवर हियर चार्ज स्टोर्ड विल डिक्रीज, बट व्हिच वन विल रिमेन कांस्टेंट, V रिमेन्स कांस्टेंट. तो ये वाला फैक्टर यहाँ पे हमें मिलेगा. क्लियर. तो ये जो इसमें अभी हमें ये चेक करना है कि ये किस में मिलेगा. सिमिलरली अच्छा ये हमारा पहला वाला केस है. क्लियर. एंड इन द सेकेंड केस में क्या बोला जा रहा है कि जो चार्ज कैपेसिटर है ऑलरेडी चार्ज है, उस अभी की को हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे. पहला केस में कनेक्टेड था, अभी ऑलरेडी चार्ज है, उसको हम अभी ओपन करेंगे. एंड प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज मूव्ड अपार्ट. तो ये वाला क्वेश्चन ये पहले से ही हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो उसको फिर दोबारा हम लोग थोड़ा चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है. कि इसमें अगर आप देखोगे हम अभी इसको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं. क्लियर. फ्रॉम द बैटरी. तो अभी प्लेट में सेपरेशन कितना है, प्लेट में सेपरेशन है 8 mm. क्लियर. और पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना है, 1.5 वोल्ट. क्लियर. राइट नाउ विल इफ वी फर्दर इंक्रीज द सेपरेशन, तो आप मान लो कि 9 mm करें तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीजिंग. क्लियर. पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. क्लियर. बट व्हिच वन इज नॉट चेंजिंग. तो इसमें अगर आप एक चीज़ देखोगे तो अभी अगर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इंक्रीज बढ़ा रहे हैं या फिर घटा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, ये वाला जो फैक्टर है आप चार्ज देख रहे हो, चार्ज इज रिमेनिंग कांस्टेंट. वो 0.33 पिको कूलम उतना ही कांस्टेंट रह रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा है. बढ़ा रहे हैं चार्ज उतना है, घटा रहे हैं चार्ज उतना ही रह रहा है. क्लियर. जब हम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग. व्हेन डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज डिक्रीजिंग, पोटेंशियल इज ऑल्सो डिक्रीजिंग. क्लियर. सो जब डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन को जब हम डिक्रीज कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है. क्लियर. तो ये वाला जो फैक्टर है यहाँ पे, इसी चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है,
सेकेंड केस में ये बोला जा रहा है distance of separation will increase, that means it is an obvious fact that capacitance will decrease, but here this charge will remain constant, चार्ज यहाँ पे constant रहेगा, लेकिन क्या चेंज होगा, कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रहा है, तो कैपेसिटेंस के साथ पोटेंशियल का रिलेशन क्या है, v इक्वल टू क्यू बाई सी, सी डिक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल में यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा, दैट मीन्स v विल इंक्रीज, v यहाँ पे क्या होगा, v विल इंक्रीज। क्लियर, तो ये दो रिलेशन हमें यहाँ पे मिला, तो ये अभी चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो फर्स्ट में, इन फर्स्ट क्यू कांस्टेंट बट क्यू रिमेन सेम बट सी चेंजेस, पहला वाला केस में जो है, पहला वाला केस में क्यू कांस्टेंट है बट यहाँ पे हमें क्या मिला है, भी कांस्टेंट मिल रहा है, यहाँ पे हमें क्या कांस्टेंट मिल रहा है, भी कांस्टेंट है, क्यू डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्यू चेंज हो रहा है, और सी तो चेंज हो ही रहा है, तो क्यू रिमेन्स कांस्टेंट, सो दिस इज रॉन्ग। इन सेकेंड ऑप्शन, इन सेकेंड केस भी रिमेन सेम बट सी चेंजेस, यहाँ पे भी सेम रहेगा, भी सेम नहीं हो रहा है, भी कांस्टेंट नहीं है, भी चेंजेस हो रहा है। क्लियर, क्यू सेम रहे। क्लियर, इन सेकेंड केस क्यू विल रिमेन सेम, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। एंड इन थर्ड ऑप्शन, इन फर्स्ट केस ये वाला केस में बोला जा रहा है कि भी रिमेन सेम एंड हेंस क्यू चेंजेस, भी यहाँ पे सेम है एंड हेंस क्यू चेंजेस, दैट इज करेक्ट। एंड इन सेकेंड केस में बोला जा रहा है कि बोथ क्यू एंड भी चेंजेस, क्यू एंड भी चेंज हो रहा है, तो भी तो चेंज हो रहा है, क्यू चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज रिमेनिंग कांस्टेंट, सो ऑप्शन डी इज रॉन्ग। सो हियर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन।